मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को फिर से एक बार पुनः आप लोग सभी का स्वागत है संडे के स्पेशल क्लास में। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए प्लीज। सभी लोग अपने जगह पर बैठ जाएं प्लीज। आज हमारे क्लास में हमारे आज के मुख्य अतिथि गेस्ट के रूप में मेरे बहुत ही अजीम मित्र श्री नरेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। वो आए हैं अपनी धर्मपत्नी प्रीति भाभी जी के साथ और उनके दोनों बच्चे रियान और वियान का भी हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं। नरेश जी जो है उनके साथ मुझे सौभाग्य मिला, उनके साथ मुझे पढ़ने का आईएम में, लेकिन के साथ जब मिला और उनके साथ जब पढ़ाई की, जब साथ समय बिताया, तब पता चला कि वास्तव में हम लोग दुनिया में कितना कम जानते हैं, कितना कम कर पाते हैं, है ना। और नरेश जी न सिर्फ उन्हें जो है आईएम से पढ़ने से पहले भी वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर थे, लेकिन उसके बाद वो जो है ना वहाँ पर बैंगलोर में यहाँ से शिफ्ट हो गए और वहाँ पर ब्रांड सिनर्जी नाम से उन्होंने अपनी एक ब्रांडिंग फर्म की स्थापना की वहाँ। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने जो है, हालांकि प्रीति भाभी हम लोगों की वो गूगल में सर्विस कर रही थी और नरेश जी और प्रीति भाभी दोनों ने काफ़ी प्रयास किया हम युवा के लिए, खासकर क्योंकि गूगल में जो है आप लोगों को शायद पता है नहीं है, लोग जानते हैं, है ना, उसके बारे में हालांकि प्रीति भाभी थोड़ा सा उस पर और बताएंगी। जो गूगल जो है ना, जो एनजीओ जो सामाजिक संस्थाएं हैं के लिए गूगल क्या करती है कि ऐसे जो संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही हैं, जो समाज के बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, गूगल जो है उनको लगभग शायद मुझे जहाँ तक याद है साल का नहीं, मेरे ख्याल से महीने का ही शायद या कुछ है, लगभग 10 लाख रुपया देती। तो उसमें क्या है, लेकिन गूगल क्या है उस तरह से कैश के रूप में नहीं देती है, तो जस्ट कॉइन्स के रूप में कि आप उसको रिडीम करते जाइए। गूगल के जो गूगल के एड्स हैं आप उसको, काफ़ी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन हम लोगों के पास क्या, मैं थोड़ा टेक सेवी कम हूँ और लोग भी जो है ना यहाँ पर हमारे पास थोड़ा तरह से नहीं थे कि करनी थी वो हम लोग कर नहीं पाए, तो अभी और नरेश सर जो है वो अखार के छोड़। इसी तरह से आज मैं फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार आइए, बहुत दिन हो गया आपके क्लास में। तो इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद जो है ना अच्छी खासी भली नौकरी है और वहाँ पर हैदराबाद में थे, उनको छोड़ दिया, उसको छोड़ के फिर वापस जो है ना तो छोड़ के फिर वापस जो है वो फिर यहाँ रायपुर आए, रायपुर नहीं आए, उसके बाद उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और अहमदाबाद में इरमा है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसमें उन्होंने फिर से जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग में उसमें उन्होंने एमबीए की। उसका पीछे कारण ये था कि इन्होंने तो आईएम से कर ली थी, लेकिन बाद उसमें करने के था कि इनके मन में एक सपना है कि कैसे जो हमारे देश के किसान हैं, जो धरती पुत्र है, बेसिकली उनके वजह से ही हम हैं, है ना। अगर वो काम वो नहीं कुछ करें तो हमको खाना भी ना नसीब, है ना, जो मेहनत करते हैं। तो उनको ये लगा कि ये वास्तव में जो मेहनत कर रहे हैं इनको वो हक नहीं मिल पा रहा है, तो इसी चीज के लिए जो है इन्होंने फिर अपनी सब सारी नौकरी वगैरह सब छोड़ के फिर से वहाँ अहमदाबाद में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद जो है फिर यहाँ पर एक स्टार्टअप इन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें कि किसानों के लिए के बेहतरी के लिए काम करने के लिए तय किया और अपने जो भी जितनी भी सैलरी थी या जितना भी इनकम था वो सबको कुर्बानी देके कम में ही। तो मैं एक बार नरेश सर से, भाभी से और रियान से भी चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले अपने स्थान यहाँ पर ग्रहण करें। सर आइए सर, भाभी और इस बच्चों को अंदर, प्रीति बच्चों को एक नहीं हाँ, मैं नरेश सर और प्रीति भाभी दोनों से 1 मिनट के लिए चाहता हूं कि यहाँ पर आप लोग आए और मैं
पल्लवी वर्मा जी से चाहता हूं कि आएं और सर का जो है श्रीफल और इससे स्वागत करें। रामेश्वर जी से चाहता हूं कि थोड़ा सा मोबाइल से फोटो ले लें कम से कम प्लीज, है ना। तो 2 मिनट थोड़ा सा, है ना। हम 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको कि माला बना के 1 मिनट। तो रामेश्वर तुम भी ले लो। हाँ ठीक, हाँ चलो। तो ये गांधीवादी तरीका है जो सब हम लोग फूल की जगह सूत की माला से हम लोग ये करते हैं। दोनों को ही, दोनों सर श्रीफल आप ग्रहण कीजिए सब, मैंने जो है। ठीक है, आइए प्रीति भाभी आप आइए बैठिए अब, है ना। अब मैं चाहता हूं कि नरेश सर से चाहता हूं कि वो अपना जो है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके मन में क्या सपना है, युवा को कैसे जानते, युवा के लिए क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि पर बताएं। यहाँ क्यों तुम लोग वहां से उठ के चले जा रहे हो, इसे आ जाओ जल्दी से। आगे कौन? ठीक। ना ठीक है। Good morning to all of you. How are you doing today? It's a Sunday. Sunday is a holiday. Sunday is a jolly day. No? It is partly holiday because you are here studying something. So you have classes on all Sundays. No week offs. No day offs. 30 days a month. 365 days a year. Awesome. Amazing. All right. So first of all, Rajiv sir has already introduced all of you. And of course, first of all, I would like to thank him for all the great work he has been doing. I mean, there are very few people who come forward in our society to help others, particularly in situations where it requires time and money to invest it from your pocket and not from any other supporting agency, right? And he is doing it not for just 1 or 2 or 3 years, but so many years, about 2 decades now, isn't it, sir? And so, first of all, a big round of applause for his commitment and contribution. So, of course, I am also fortunate to study with Rajiv sir at IIM Raipur. Okay. Just for a background, and just set the grounds here as to why I am here, what I am doing, and what I have to say has to connect with your dreams. Okay. I'm here just to connect and have a talk. So just a minor correction here. I'm not here for any technical session as such in English. Just here for a quick conversation with you and just to understand how we can do better in terms of designing your course module or delivering the course module so that it helps you do better in your examination, number one. And not just that, beyond that, how that you develop particularly in English take you forward in your life, not just career. Those are the things we'll talk about. So for a background, how does English come into play and how does it connect with question number? But before I go to the question number one, I would like to give a round of applause to all of you who have come here for a dream and you're working hard for yourself. Working on a Sunday and investing time and energy in yourself, having a dream in your heart for yourself, for your family, and for the country. And you're putting in all these hours because you believe that there's a dream which will come true. So a big round of applause to all of you. All right, just a quick one, so and a bit of introduction. How does English come into the okay? So how it does happen. Well, I'm also from a farmer family. My father is a farmer. We have a small agriculture, Palari. How many of you are from around Palari or Baloda Bazaar or Bhatapara? One. You're from? Tildaneora. Okay, Hadban. That's very near. So that's my village is away from Hadban, called Dawan Board. So I'm from a village.
Um, Not that I had parents who could educate me so much in English, because my father is a farmer. He's fifth standard passed, and so are my uncles, and that's the of the command of the language that has come from interacting with have good command of language, plus a bit of work profile for 9 hours. And here I was also working as an assistant professor for communication. I was also several years after I passed out here from Raipur. That was back in two. Right. So the story is set in the grounds like yours. You have a dream, but there are limited resources. I knew that. You're fighting that. Fighting those trying to come up in your life. That's exactly the that I was faced. Another quick background. When I was 2.5 years of age, I was formally adopted by my uncle and aunt. I did not have the fortune my parents and be brought up with their love and warmth and caring. Um, Gave it to my uncle and aunt who brought me. My uncle and aunt were working in private companies. Centuries Vaikunt. Then they moved to Rawan, where had the Ambuja. These were the where I was educated. One good helped me get command studying in right from the. But it did come with its share of sacrifices. Sacrifice was I wouldn't be with my parents. I would be with my uncle and aunt. You guys are very fortunate. Parents love you, fight, but at the end of the day, belong to you, caring with you, right? That kind of I had to stand. I came Ravi Shankar, my bachelor's in how the journey about my education. Like you guys also, I felt deprived. In fact, I was also kind of identity crisis. I did not know what will work really in my mind. Right. Felt I did not have to. There was 100% concession given by this, not because of my background as, but it was always. Thank you so much. I was always in the top positions in the class, always ranking. That's what that actually had me. I did not have to pay. Did try to give back to this. Well, as a I time I scored. Okay, and that was many years ago. Was not be broke batches who have the record. No, we continue to improve. That's Ambuja Vidya. Yeah, that's Ambuja Vidyapeeth. Has any of you seen Ambuja Vidyapeeth? Passed by Baloda Bazaar Road, Baloda Bazaar to Bhatapara. No. Okay, only you have seen. So that's Ambuja Vidyapeeth. So and for this thing, okay, I got a merit certificate from CBSC, okay, which means X and X,
Naresh is amongst 0.1% of the top students in science CBSE board examination. So a letter of merit was issued by CBSE board. I was an additional scholarship by CBSE. Okay, in addition to, and then there was a personal admiration also. The MD of the company, Ambuja Cement, okay, he wrote an appreciation letter to me saying, Naresh, you've done a good job, you've made me proud. And then those days we also used to have this in-house magazine of the companies. So in in-house magazine, there was a special article appreciating me on how I have made the school proud by scoring for that much and coming into the merit for the first time in our school in the CBSE board. So that's how the journey came. But again, what is the crux? I'm not here to appreciate the achievement. What I'm trying to say is sometimes success goes hand in hand with your inadequateness. When you really feel inadequate somewhere, you try to compensate it with the achievement. So do not believe that just because something is inadequate, it is a limitation. Start looking at it in that way, that sometimes when you have something which is inadequate resources, inadequate money, inadequate connection, skills, whatever, when you have something inadequate, it is a fuel for a bigger success, not always a limitation. It can be a fuel. I mean, it's the way you look at, because there will be situations where people will be in my situation, might have not have done what I have done, but basically it's all about thinking. You think that that's a limitation, but that's a fuel, then use this fuel for your. So it so happened that after doing my baby Bachelor of Business, I went back to my home. And there are some parts of this telling you, I don't like to talk about it so much, but again, we are a family and I'm here to show you some insights of how life happens to all of us. I'll share a bit of a piece of life. So it so happened that after grade, I was ambitious of doing MBA. I want to do MBA, I want to do MBA. Every time I would go to my father in the village, I will bring some prospectus of SP Jain, I am, Ahmedabad and IRMA, Rural Institute, all those brochures I will bring and show him, Babuji, ये देखिए, ये MBA है मेरे को, ये program है. And he said, हाँ ठीक है, करो हो जाएगा. I was very happy. Started preparing for the examination. Very soon I realized that my father was not so good that I could be supported to get an MBA. So far, my education was supported by my uncle and aunt. I told you, I was brought up by them. I was financed by them. And by this time, they had their own kids. Earlier, they did not have. That is the reason why they adopted me. For 10 years in their marriage, they did not have a kid. So they adopted me. And later, they had kids. And they had responsibilities because kids were growing, their school, they're taking care of themselves. So they did not have adequate help me go to an MBA school. Okay, my father, he is a farmer. He never thought this boy will come and ask for some lakhs of rupees to study in MBA. So, though he cheered me up, but the situation was he couldn't afford. So I was in a lurch. Okay, now what do? You are a meritorious student in your. You have studied hard all your life. You are one of the top students in school, and you have brought all these laurels to this. Okay, you have done the best you could. Have established yourself the way that see you as a capable person, and here you are trying to step up from a graduation to a post graduation. Not have means for an MBA. So I asked my father what could be done. I wished that uncles would help and all that we could. And that was the day when I got shattered. That was the day when my journey actually of self-realization, trying to believe that if anybody brings you up, it's you. Right? So that's the day I set for a realization. I said, okay, मैं कुछ से कुछ करने की कोशिश something.
I'll make something out of my life. मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँगा, ये करना सिर्फ वो ग्रेजुएशन था। और फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर कुछ जॉब्स वगैरह अप्लाई की कि चलो रायपुर में है, जॉब्स अप्लाई करके एमआर का, कुछ सेल्स गाय का कुछ बन के कुछ धीरे धीरे मैं आगे बढ़ के एमबीए कर लूँगा, ऑल दैट स्टफ आई थॉट। दो चार इंटरव्यू के लिए आया भी, बट इन सेल्स जॉब दे नीड हैव योर वे, राइट? इफ यू गो फॉर अ सेल्स जॉब दे विल से कि बाइक है कि नहीं है, इफ यू डोंट then sorry, you could be qualified but can't take you. Same situation, I could not get any job. Okay, what do I do now? Yeah, yes, because you need the vehicle for that. Okay, a grim situation. What do I do? Then I came in terms my life. Reality really stuck in, was not something which I liked. Painful, of course, but okay, I tried doing. So what did I start doing? I started the students of my own village, okay, for science, for English, for their board examination, and that was about from now. I would be charging them around 20 rupees, 25 rupees, 30 rupees per month. Those were the charges that I would take from them for training them. Okay, I did that for a couple of years. I did not have any other way. I could not think of what to do. Okay, so that's how I started. Then I gradually thought, okay, English has been my forte and the skill which I perhaps can help me further. So that's one skill I identified in myself. Okay, English language. And then I thought I'll build something on this. So nearby my village, there's a town called Bhatapara. You must have heard of it, Bhatapara. आप लोग रास्ते से भी. There I went. कि ठीक है बाबूजी, मैं गांव ही छोड़ दिया, समझ लीजिए। मैं जाता हूँ, कुछ करता हूँ, बन के आता हूँ भाई। गांव में तो मैं रह के कुछ कर नहीं सकता। I have to do something. I'll go. मुझे पता नहीं what I will do, but I left the village that day. मैं बोला कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या करता हूँ। In future I'll be not, whether I'll marry, have a family. I do not know anything. क्या होगा? But let's hope that something good will happen and I walk further. So I came to Bhatapara. I started my own coaching called My Coaching, and I started training like you all for their spoken English. I was also good at handwriting, and I had learned it in a scientific way. I was teaching small kids, 3, 4, 5 years for improving their handwriting. Number of things were going on. So I tied up with a number of other institutes. This ISECT was running well. I don't know how well it is running. ISECT was running well. So I would go to ISECT centers, train even the graduates and the housewives who would be there. So gradually I established some kind of reputation there, and then I continued my coaching. Did it for several years. And then I went to Vizag because I had to progress further. I mean, how far could you the kids? I always thought I had something more to do. So I continued to be there. I went to Vizag. I started working with HSB. You're aware of HSB Bank? Yeah, how many of you know HSB Bank? Okay, not many. It's an international bank, HSB. Okay, so for 4 or 5 years I was in Vizag, and I continued bank. Now, how did that help me? That helped me again in my communication, because I was interacting with the American day in day out, 9 to 10 hours I will speak. Okay, trying to talk about their accounts. This is a bank. They would take loan from the bank, home loan and all that, and credit card debts and all that, and I would call them and try to settle their dues, have dues, and I would talk to them and say, okay, what could we bring your account current back to normal, because they were overdue. समझ लीजिए कलेक्शन के जैसा है। हाँ, वसूली के लिए कभी कॉल आएगा? अब खैर आप लोगों को नहीं, आप तो बहुत छोटे हो। कभी कभी वसूली के लिए भी कॉल आता है, हाँ भैया वो पैसा मेरा कब दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? तो वही काम है, लेकिन इन अ मोर पॉलिश्ड वे, English way. Okay, hello, this is Naresh calling from HSBC Bank. Can I talk about your account? Yeah, sure.
well, your account is showing an overdue of about $10,000. Can you pay that today? Okay. No, I cannot pay that. Oh, I understand you not been in a situation. Okay, that let's look at the solutions. What solutions do we have? Do you have something in your garage that you can sell and you can pay this money? Oh, no. Can you beg and can you borrow some money from your friends and pay this debt? How about talking to your wife's father and seeing if he can give you some money? Okay, so all these things I would do as a representative to bring the accounts back. But the crux is not about the job, it's about the use of communication skills. Before going into this, I was given training for voice and accent in English. And that's the reason why you could see that my language could be a little different from what you have heard from people, right? So my language is this way because I have been trained in voice and accent training, okay? And when you interact with UK customers, you develop this kind of accent. अभी ऐसा नहीं है कि अरे यार ये आदमी तो बड़ा बना के एकदम इंग्लिश टाइप में बोलता है, ये तो ये क्या है ये, मतलब आवाज है ये आदमी तो ओके, इट्स नॉट दैट वे, इट कम्स नेचुरली. अगर आप देखिए एक बिहारी से रोज 9 घंटे बात कीजिए 5 साल तक, ठीक है, और उसके बाद अपने एक दूसरे दोस्त को बोलिए कि वो आपका फर्क बताया 5 साल पहले और 5 साल बाद, क्या आपके लहजे में थोड़ा सा बिहारी टोन आने लगेगा? है ना? आइए बैठिए बताइए जरा आइए बताएंगे, तो वो थोड़ा टोन आ जाएगा आपका, राइट? तो दैट्स द सेम वे व्हेन वी इंटरेक्ट विथ यूके एंड यूएस कस्टमर्स. 9-10 घंटे डेली उनसे बात करना है, उनके अकाउंट के बारे में रिजॉल्व करना है अकाउंट को, तो बाय नेचुरल प्रोसेस इट कम्स इनटू. और आपको ऑलरेडी टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई है वॉइस एंड एक्सेंट की. वॉइस एंड एक्सेंट की एक ट्रेनिंग हो गई, एंड सेकंड इज योर प्रैक्टिस, बोथ कंबाइंड. देन यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक अ पर्सन हु लुक्स लाइक ओके, ये दिखता तो आदमी इंडियन है लेकिन इसका स्टाइल अंग्रेजी क्यों है? ओके, सो दैट्स द काइंड ऑफ मिक्स जो पैदा हो जाता है, and that's the kind of mix that you can see. Okay, this guy looks like an Indian but he speaks like an American. What is the problem with him? Okay, so this is what it happens. What it is, the crux is practice. All right, so we did that, and then long journey, then I came to Hyderabad and I started working as a that was a night job. I was not very happy with night jobs, going to the office at 11 o'clock at night and coming back at 9 in the morning changes your whole routine. लोग दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं हम सब. दैट्स द वहाँ उल्टा चलता है, आप रात में काम करते हैं दिन. अब आपकी परिवार तो रात को ही, तो आप परिवार से कट जाते हैं. फिर आप जब सो रहे हैं तो वो जाग रहे हैं, वो जब जाग रहे हैं तो आप सो रहे हैं. बात करें तो कैसे करें, कब करें, इट आइसोलेट्स यू. और बॉडी का बायोलॉजिकल साइकिल भी उल्टा हो जाता है. फिर सुबह उठ के आदमी नहाता धोता है, वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, नाश्ता करता है. अभी मैं शाम को 6 बजे 7 बजे सो के उठता हूँ, नाश्ता धोता करता हूँ, उल्टा साइकिल चल रहा है मेरा. शाम को मेरी सुबह हो रही है. So all these things I did not like that so much. Let me move on, and then I moved on as an professor for. Again, एक स्किल थी जो मैंने पकड़ी हुई थी और वो मुझे आगे ले जा रही थी. आपने देखा स्कूल में मैंने इंग्लिश में अच्छा खासा है ना, आई वाज ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स एंड डेक्लेमेशन. ओके, ऐसे राइटिंग हो गया, हर कुछ जो एक्टिविटीज होती थी, आई वाज एक स्किल पकड़ी मैंने लाइफ में. ओके, दैट हेल्प मी कम अप व्हेन आई वाज इन अ लर्च इन माय विलेज. जब मुझे कोई डायरेक्शन नहीं, समझ में नहीं आया क्या करना है, एक स्किल केम टू, it took me forward in my life, right? So what I'm trying to say is, take one of your good skills and let it take you forward in your life. Continue to develop it regularly, okay, through your technical education, that formal training, also informal by applying it. Okay, I've not become so good in speaking, okay, just because I have read some grammar books, okay, or just because I had been doing that in school so many years. Because English medium school also, you'll see there are many students who have been studying in English for all their schooling, but would not be very confident speaking in English. Do you know those people? Okay, what is the reason? Practice, right? So they just
go through some grammar books, they will cram and they will write the examination. Okay, you're done and back to the normal life. Okay, but some people will try to bring it in their lives. Okay, not as a part of show off, लेकिन हो सकता है वो छोटे छोटे सर्कल में ही आप जैसे जो हैं वो they'll try speaking with each other in English, like you will speak with each other in English. Okay, और एक intention के साथ कर रहे हैं वो, ये नहीं कि it's like show off and all that. It's for the purpose of building that skill. Okay, I'm all for the Hindi language as well, लेकिन इंसान को दो तीन लैंग्वेज तो कम से कम आनी चाहिए. 3 languages you must know in order to survive in this world. एक आपकी मदर टंग, राइट, वो तो हमको बचपन से ही जो मिल जाती है. ओके, दूसरा आपका नेशनल लैंग्वेज, नो, है ना, क्योंकि हमारा राष्ट्र है, कहीं पर भी कुछ बातें हो रही हो हमें समझ में आनी चाहिए. एंड वन इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो आपको कनेक्ट करेगी, राइट. शुड हैव एटलीस्ट 3 skills, 3 languages. Okay, you are definitely good at your mother tongue. You're definitely good at Hindi, which is our national language. This is one language, international language, which I would like you to develop as well. ठीक है. So basically the crux of all this journey, वो सब जो मैं बात कर रहा था, सिर्फ crux यही. Put your skills into practice. Okay, you guys have English as a part of your competitive examination, right? Okay. One part is writing the examination and doing. Yes. What is the other part of practice? Now I'm trying to get insights from you. Okay. Now you are the speaker, I'm the listener, and I want to know that you learned. Are you taking it in life? No. Okay, but okay, as you guys are aiming to be, you're preparing for PSCs, right? Okay, so that you will take a responsible government position, right? And responsible government position requires that, of course, you interact with the local language, national language, but it might also require you to interact with people of high influence, high power, also to connect with other people outside. Good to know the local language. Somebody comes and start talking in English, or you have to go to a forum where a lot of educated people are there. Let's say you're going to South, deliver a talk. Okay, ठीक है, आप कलेक्टर बन गए हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, and somebody in Hyderabad invited you. भाई ये आदमी बहुत बढ़िया काम किया है. Why did you come here and share your experience? South, obviously, not that they do not understand, but actually it's not so much in practice. They are more in love with their language. That's the limit. Not speaking language, you can. What do you do? Language. Everybody there's so my request is take English not just a part of your exam, but as a part help you grow. That even in today the world has become so globalized, so it's a small village after COVID that we are working with each other on Zoom calls and whatnot. There are a lot of learning platforms, online learning platforms, and much of the self-development courses, like let's say you have to do a master class on planning your life. Somebody is talking about planning your life, somebody is talking about effective use of time, somebody is talking about how do you get the best of your health, whatever angle you can. A lot of development materials, a lot of this personal development materials, they are taught in that way because the trainers are from the other countries. So how do you access that if you don't? Of course there will be a version of, but listening it direct from the author in English.
ही रही होगी. Is everybody able to hear me? अच्छा है. Oh my goodness, this is a live class. Oh my goodness, I never knew about that. the use of the use of technology. Oh really? Fantastic. I'm very glad to know. Wow, awesome. Wow. Awesome. I did not know about it. So, well, hello to all the people in the YouTube there watching me from a distance. Okay. So this has been the talk. What I want to say is, take away from here is, okay, I love Hindi, national language. I have a lot of, I'm not here to promote a foreign language and say that, another language that you should substitute with the other language. Not a substitute, add on. Okay, I want you to get additional skills. Love our language, love our mother, get another skill also, because that you will give you the access to all the self-development material, all your subject matters. That's what our subjects. Sorry, you guys are all graduates here. All graduates here. Okay. No, most of the people. What is the standard like from 12th to pursuing graduation? Okay, so not through graduation, but all of you are in the phase of graduating, either graduating or graduated, right? Either of those, right? Okay, so what is your subject in graduation? I'm sorry, can I take your name? Lokeshwar, huh? Lokeshwar, what are your subjects in your graduation? Have you passed out or you've graduated? BCom. What were your subjects? Okay. Let's come to economics. Who is the father of economics? Adam Smith. Nice. Good. Give him a round of applause. Now you want to read the books of Adam Smith. Okay. You are a person interested in knowing things deeper, not just, but sometimes what Adam Smith. Okay. You remember the book which Wealth of Nations. Very good. Another round of applause. Okay. Now you want to listen to the Wealth of Nations. You want to read Wealth of Nations. For example, all these books are also on Audible. Okay, Amazon Audible. So one option, Wealth of Nation, Adam Smith का आप हिंदी में किसी हिंदी ट्रांसलेशन. Option 2, okay, in Adam Smith voice, actual आवाज में बुक लिखी है, ज़्यादा आपको कनेक्टेड फील होगा. ऑप्शन 2, क्योंकि वो ऑथर जिसने लिखा है वही बोल रहा है कि आवाज में समझ में हो सकता, तब ऐसा लगेगा कि आप सामने वाले से बात कर रहे हैं. और बुक्स नहीं होती वो कंप्लीट डिस्टिल knowledge. Somebody works hard for 10, 15, 30 years and then they write a book like of their life, the book that way. So books are very precious in that way, and the knowledge is very आया है, right? उसको कमर्शियली नहीं लिख दिया है कि भाई 7 be better in life. किसी आजकल चल रहा है, पब्लिशर आ दिया 4-5 पन्ने अपलोड कर, ऐसा नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. टॉकिंग अबाउट ट्रेन करते हैं, जो लेक्चर देते हैं, जो कि स्कॉलर्स हैं, सालों साल उस चीज़ को पढ़े हैं और आपको जानने का मौका. तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑर्गुमेंट कर, आजकल बहुत कोर्स हो गए हैं, मैनेजमेंट आप अपने और आगे करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स और अच्छा कर, ऐसे इंस्टीट्यूट आप बोलेंगे IIM जाना है, अपना वहाँ MDA होता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. ठीक है, चलिए कलेक्टर्स के लिए उन्होंने एक IIM ने हमारा रायपुर ही ले, IIM Raipur is doing a seminar, okay, for the collectors, and they are going to especially talk about administrative skills that a collector should have, right? ऐसे प्रोग्राम में आप जाएंगे, आप इंग्लिश को समझेंगे, बोलेंगे नहीं, हाँ, क्या फायदा उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे ना फायदा. हाँ, यस.
Absolutely, I was forgetting. Great, ये पार्ट में भूल रहा था. राइट, आप लोगों का जनरल अवेयरनेस भी एक सब्जेक्ट रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. Okay, so general awareness requires you listen to a lot of news also, understand them. Okay, and again, सब जो है वो English national agenda that अब कहीं कहीं से right कहने का मतलब all connected world. Language proficiency are a must. You have proficiency, you need to have proficiency on more English language. So my request to you, start looking at language way onwards, not just as a subject that you have to pass in your competitive examination, get your dream position, get a government job. That's a part of it. Bigger part that is that it will help you build skills in life. That will help you connect with other people. That will help you learn more. That will help you connect with society more. Take it that you must have and work towards. So there are classrooms. As you said, do they also have sessions on? Not at all. That is something which we can. Okay, all right. So that is okay. Very fine. This is exactly what I was doing 20 years ago. Okay, and I say, and I ask whenever I started. Okay, we'll wrap it up in 5 minutes. Got to go now. Okay, how do you learn a language skill? I'll leave you with this piece of curiosity, and then we'll call it a day for. Right. Just I'm putting thought in your mind. Okay, I talked about developing. Take a third. How do you go about it? I mean, what do we do for our communication? Okay, let's invite some thoughts from. No, that's one part of it. I'm the resource person. Let's say resource person is there to facilitate. Okay, what you do at your end? What will you do? Okay, let's take some ideas. What will you do to improve your communications? Expose yourself to that. Prakhar. Okay, Prakhar is saying we should expose ourselves to that environment amongst group which speaks in English, okay, or which is also committed to developing there. Okay, some other ideas. Come on, please. This is going to be a little more interactive. 5-10 minutes. You can do practice. Okay, what kind of practice? It's one part. Okay, we're just taking piece. One part is having an environment. Number 2, reading. What else? Newspaper read. So many things. Reading, comprehension, and all that. Okay. डेकोरम नहीं होता ना सर तो हम Decorum से मैं समझता हूँ another word for discipline. Then अच्छा ठीक है. I think वो environment का ही part है कि environment में लोग तो है but they should be committed and sincere. नाक मस्ती गपशप मारने के लिए नहीं बैठे हैं, वो भी करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम करेंगे तो इंग्लिश में करेंगे. राइट, ठीक है. और एक दूसरे को थोड़ा हेल्प करेंगे. टांग खींच रहे हैं आके जो टांग खींचने सेशन है तो उसका एनवायरनमेंट का पार्ट ले. तो हम लोग अभी ख्याल से 2 पीस पकड़ पाए हैं. एक है एनवायरनमेंट और दूसरा है रीडिंग. तो वो एलिमेंट क्या? एक मिनट. टॉक्स विद न्यू पीपल. टॉकिंग. ओके, चलिए एक थर्ड एलिमेंट ऐड हो गया. अब भी शायद ऐड हो गया. अब तो एक टॉकिंग का एलिमेंट ऐड हो गया, एलिमेंट ऐड हो गया.
रैप अप करते हैं ताकि हमको, उन्होंने कहा एनवायरनमेंट चेंज करने कहा, ठीक है। ये नहीं, पल्लवी, क्या पल्लवी ने कहा कि रीडिंग डेकोरम का डाला पार्ट ऑफ अच्छा एनवायरनमेंट होना है, अच्छा एनवायरनमेंट, रीडिंग, कहा कि बात करना चाहिए नए लोगों से, जो भी आपके कनेक्शन में मिले। क्या तीसरा एलिमेंट जुड़ गया? चौथा, क्या आपने, अच्छा आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि मूवीज देखना चाहिए। मूवीज में क्या सीखते हैं आजकल? तो सब टाइटल भी रहता है। आप मूवी देख रहे हो तो आपका लैंग्वेज का कौन सा पार्ट मिल रहा है आपको? मतलब मूवी में आप बात तो करोगे नहीं, यू आर नॉट अ स्पीकर, यू आर ऑल्सो नॉट राइटिंग, कौन सा स्किल लैंग्वेज का आ गया वहां पर? नाइस, लिसनिंग। आपका नाम? लिसनिंग का सही है। हाँ, आपका लिसनिंग का स्किल्स आ गया। और राइट, सम अप करते जाते हैं, बिल्ड करते हैं, एंड देन विल लीव इट देयर। राइट एनवायरनमेंट, ओके, देन रीडिंग, ठीक है, देन स्पीकिंग, ठीक है, देन लिसनिंग, है ना, आपने लिसन, ठीक है, और क्या, और कुछ छूट गया तो हमारे पास, तो हमने बात कर ली अबाउट रीडिंग, वन इज लिसनिंग, और एक रेफरेंस बार बोल देते, रेफरेंस हेल्प करते, रेफरेंस ग्रुप। कुछ छूट रहा है? राइटिंग, राइटिंग भी है नाम साक्षी। Sir, definitely changes come in speaking also while practicing of writing, because we learn how to make sentences. If we write and then just read it, then understand by self also and correct or wrong. क्या आपने महसूस किया है कि आपकी राइटिंग प्रोसेस बाकी सभी प्रोसेस से स्लोअर रहती है? लिसनिंग फटाफट हो जाएगी, स्पीकिंग, अरे आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन फास्ट, हाउ फास्ट, इंग्लिश 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 इंग्लिश, see how fast I speak. Okay, right. So you can speak fast. Listen. Okay, 1x को 2x 3x स्पीड चालू कर दिया आपने, न्यूज चल रहा है, हाँ सुन लिया मैं, राइट। All these processes can be expedited. Writing something that, okay, एक बार सेंटेंस लिखोगे, सोचोगे यार सही है सेंटेंस है, यार सही है, बहुत सारा है ना, तो आपका परफॉर्म कर रहा हो, आप फिजिक्स हो, आपका सॉफ्टवेयर इधर चल रहा है, हार्डवेयर, ओके, ये हार्डवेयर ऑपरेट हो रहा है, कॉपी में लेटर्स चल रहे हैं, लिखते हैं, हार्डवेयर का प्रोग्रामिंग इधर है, सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें क्लियरली नहीं है तो हार्डवेयर उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, राइट। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग। राइटिंग आपके सॉफ्टवेयर को, मतलब आपकी दिमाग की वायरिंग को ठीक करता है। तो अगर मेरी दिमाग की वायरिंग ठीक हो रही है राइटिंग से, आई थिंक इट विल मेक बेटर स्पीकर ऑल्सो। कुछ कनेक्शन हमको दिखता है क्या? इफ आई एम गुड एट राइटिंग, हेल्प मी एस, राइट, ओके, तो एक और कनेक्शन मिल गया, है ना, एक और पॉइंट मिले कि लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, एक और इनसाइट मिल गई, राइट। तो दैट्स द क्रक्स ऑफ इट, ठीक है। सबसे पहले जो है वो बात की, ऑफ कोर्स दैट इज इम्पोर्टेंट, हम बोलते हैं आर, रेफरेंस, राइट एनवायरनमेंट का आर है, साथ हेल्प कर रहे हैं, और जो आर में रेफरेंस, आपको हर चीज़ सही या गलत है, वो बहुत सारी चीज़ को या तो कोई पर्सन बता दे या पर्सन नहीं, यू विल हैव टू गो टू और ऑनलाइन, ओके, एग्जाम्पल एच, राइट, इसमें साउंड, क्या साउंड होना होता है, एच से कौन सा का,
स्कूल, SCHOOL स्कूल, H का होता है, राइट? ये च भी हो सकता है, नहीं च हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा स्कूल का हो गया और CH से च भी हो गया। और कुछ होता है CH से? CH से ख भी होता है। ख भी होता है। हो रहा है इंग्लिश? ताला वाला एक लैंग्वेज है, समझ में नहीं आता मेरे को। क्या हो सकता है क्या? क्या? मशीन, मशीन, एच, ओके। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेट, बहुत पेचीदा हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है यार, ये क्या लैंग्वेज है सर, खुद पता नहीं क्या क्या उन लोग। आर का पार्ट है रेफरेंस, आपको डिक्शनरी जो है ऑल्सो अ डिटेल्ड सब्जेक्ट, राइट? अपने आप में एक लैंग्वेज है, थोड़ा सा ट्रेडिशन तो है, वैसा है। अब फॉर मेरा बच्चा मेरी आंखों का तारा है, स्टार। एनी अदर थॉट्स? माई सन इज एन एप्पल ऑफ माई आईज। तो मैं इधर तारा बोल रहा हूँ, आप सेब बोल रहे हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। इडियम, ओके, ऑलराइट। तो मेरे को क्या बोलना है, मेरा बच्चे मेरे आंखों का तारा है, तो आई डू नॉट से माई सन इज द स्टार ऑफ माई आईज, एप्पल ऑफ माई आईज। अब बोलोगे यार क्या हिंदी इंग्लिश कैसा कर रहे हो, क्या बात हो गई? कहाँ साइंस है, कहाँ साइंस का तो फिक्शन होता है, तो उसका आउटकम है तारा हुआ, तो भाई स्टार तो होना था, साइंस है। ये आपने क्या पूरा साइंस तोड़ लैंग्वेज के, क्या है ये, तो सब आप लोग, दैट पार्ट इज कॉल्ड ट्रेडिशन। पार्ट को कहते हैं एक प्रोवर्ब है ना, इंग्लिश में कुछ हैं तो हैं, तेरे दादा परदादा नाना ने बोल दिया ऐसा है तो है, कोई साइंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग, राइट? तो वैसा ही है, हमने, है ना? तो यार ये तो चीटिंग है, CH में तुम कभी चा बोल देते हो, कभी खा बोल देते हो, चा बोल देते हो, क्या है तुम्हारा साइंस है? दादा परदादा ने बना, दादा परदादा ने तो बोला था MSc क्या बोलना और कुछ मत, हाँ कुछ मैं करूंगा, राइट? तो इंग्लिश इज अ पार्ट ट्रेडिशनल, दिस इज अ पार्ट साइंस। जो मैं आपको बात कहने जा रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे पता चले, चार पांच हमने शब्द खा लिए, नॉर्मल यूज कैसे यूज, आपको पता नहीं कि साइलेंट वर्ड भी रहता है ना? स्टार्टिंग कौन, बहुत सारे तो ये सब कैसे, आपने बोले डिक्शनरी, आपको पता, अच्छा इंग्लिश साउंड्स, हाउ मेनी साउंड्स, 10 20 10 साउंड, अ ब क च, जैसे हमारे अब अ इ ई, है ना? अ इ ई साउंड है कि नहीं? अ आ,
हाँ चलिए ठीक है, हिसाब से तो 26 लेटर है भैया कायदे से, ऐसा नहीं। More than has roughly language such that word sound matters. हाँ ठीक है ना, ठीक है, वो जो अपन रैप अप करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भर की है, इंग्लिश में भी आपको प्रोफिशिएंट बनना है। डेनियल जोन ऑफ प्रोनाउंसिएशन तो अपन बताते रहेंगे, और आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। आप डेनियल प्रोनाउंसिएशन में आप जाओगे, सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशन आएगा, आप मीनिंग मत देने चले, आपको लिख के देगा। तो आप बोलोगे यार ये कैसा डिक्शनरी डाला, मैं मीनिंग देखने के लिए खोला और ये कुछ है जो मेरे को चाइनीज जैपनीज वाला बुक खोल लिया क्या मैं गलती से, ऐसा सोचोगे आप। गलत बुक हो गया, बुक शॉप में चलो, क्या भैया आप मेरे को चाइनीज की बुक दे दिए, मैं इंग्लिश की बोला था आपको, ये क्या तरीका है, क्या रहता है फोनेटिक साउंड्स एंड। कहने का मतलब इंग्लिश भी अपने आप में एक वास्ट सब, आप में एक ऐसा डिसिप्लिन, थोड़ा साइंस है, ग्रामर के रूल, थोड़ा ट्रेडिशन, यहाँ पर दादा परदादा किए मैं भी वैसे ही करूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो दोनों पार्ट आपको इंग्लिश समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द पार्ट्स। और अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, अभी हमने चर्चा कर 4 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज जो LSRW, अपन इसको ऐसा समझ, LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर, R फॉर, W फॉर राइटिंग, लास्ट में एक R और जोड़ दी, जो प्रखर ने कहा था रेफरेंस। रेफरेंस आपका ग्रुप, रेफरेंस की 8-10 टाइप की डिक्शनरी, तो और क्लैरिटी देगी कि उस कैसे बोलना है। LSRW आप लेके take away from all this discussion that okay, how do you ask you how do you develop a language talking about, you have an answer ready, क्लास के बाद बाहर में भी आपको कोई गलती से इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना है, क्या है कुछ दिमाग है तेरा, ये मत बोल
हाँ बस पेपर पढ़ ले या थोड़ा, हाँ यार मेरे पास एक वर्ड है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व। कौन सा वर्ड है? LSRWR। ये क्या होता है? बता दीजिएगा, ये होता है फिर, ठीक है? ऑलराइट, दैट्स इट, ठीक है। तो इन स्किल्स को करने के लिए, पॉलिश करने के लिए प्रोग्राम करेंगे राजीव सर, ठीक है? और उससे कि आपके कोर्स के बियॉन्ड जो है वो इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज को अपन कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि वो आपके जीवन में एक हिस्सा बने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयार। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू नरेश साहब, है ना। आपका जो है हम चाहते हैं कि आप जो है ना आए इसी तरह से और इंग्लिश के बारे में हम लोग का क्लास में बताएं, ताकि हम लोगों को जो है ना, बेसिकली हमारा प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज को ही लेकर है। तो आज आपने देखा कि एक गांव का लड़का, और खासकर मैंने पल्लवी को जो है बुलाया था इसके लिए कि भाई वो स्वागत करे। उसके पीछे कारण यही था कि पल्लवी के गांव के भी हैं और सबसे बड़ी बात है वर्मा भी है, मैंने, है ना। तो वर्मा लोग जो है ना कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं। कल मेरे को रामेश्वर को सबको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, हम लोग को लगा था कि हाँ वर्मा कैसे है करके, लेकिन आज पता चला नहीं ऐसे भी लोग हैं। तो अगर एक गांव का लड़का अगर इस तरह से अपना इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी को ये कर सकते हैं तो हम सब भी कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। और नरेश सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप फिर से एक बार जो है ना, हम जब भी ऐसा मौका मिले, नरेश सर के बारे में एक ही बात बोलूंगा, 10-12 साल पहले आए थे, कुछ इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, और प्रेजेंटेशन जब हुआ खत्म हुआ तो नरेश सर के बारे में हमारी क्लास की एक बच्ची ने बोला उस समय कि जब नरेश सर ने लास्ट में बताया कि उन्होंने बात पूरा प्रेजेंटेशन, आज तो बात बीच में कई सारे लास्ट में उन्होंने हिंदी में जब बोला तो उनको लगा कि सर ऐसे हैं जो जिनको हिंदी भी आती है, वो सोच रहे थे मैं कोई दूसरे ग्रह से लेके आ गया था करके ना। तो हमारे अपने बीच के छत्तीसगढ़ के ही लड़के और अपने गांव से जो आए है ना, और जिन्होंने बताई घर में कितनी आर्थिक परेशानियां भी, वो भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम सब भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। हम लोग आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, है ना।